तो एनीबडी यहाँ पे नॉर्सेट के बारे में कौन कौन जानता है? आई थिंक आई हैव सीन दैट देयर आर टू पीपल हु हैव मेंशन्ड दैट जीएनएम कर रखा है कि लोग फ्रेशर हैं। सो एनी आइडिया नॉर्सेट के बारे में? किसी को आइडिया है यहाँ पे कि क्या होता है? Yes, sir. Sir, I am already enrolled in your program. Myself, Abhishek Bala Sahib Nakade. Yes, hi Abhishek, how are you? सर फाइन सर, गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सर Good नॉर्सेट evening. के बारे में आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ कि क्योंकि मैंने पिछली सितंबर की नॉर्सेट दी वाली है, तो बेसिकली मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था, मुझे 95 परसेंटाइल थे, और उसके बाद मैंने मेंस दी थी भोपाल में, तो उसमें मेरा रैंकिंग 10,000 आया था। लेकिन बच्चों के लिए, मेरे कैटेगरी के लोगों के लिए वो रैंकिंग चाहिए थी 1500 से पहले। सो दैट्स वाई 1500 पे मुझे मिलता था। यदि रैंक होती तो मुझे मिलता पौंडीचेरी का कॉलेज मिल जाता, लेकिन मुझे मेरे स्टेट में का नागपुर का एम्स नहीं मिलता। सो आई थिंक लड़कों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है नॉर्सेट का, मतलब लड़की के तुलना में, तो उतनी आइडिया तो है सर, इसलिए अच्छा, अभी कंफ्यूजन था, तो दैट्स व्हाई आई अटेंड दैट सेशन। okay. But thank you so much, Abhishek. I think आप already enrolled हैं in the program, so you know much better about Germany than India does. Yes sir, yes sir, And, I think there is no comparison between Norset and Germany. so let me get to that. I think वो surprise नहीं bubble burst करते हैं सबके लिए. I think for everybody in the webinar. So I would want to know others better. You know, whoever has joined in. Perfect. So what I'll do is I'll quickly share my screen, right? So I have a PPT which we made specifically for you guys for the benefit of everybody जो Norcet जानता है. So that will give a brief picture about what is Norcet, how many people appear for Norcet every year, how difficult it is to crack, like Abhishek mentioned, and what is the reason, what is the purpose कि लोग क्यों Norcet देते हैं, पहली बात तो वो भी, and उसके benefits क्या हैं, उसके drawbacks क्या हैं, and then we have some comparison, you know, between Norcet and the program which we have for nurses, जिस जो आपको allow करता है in settling abroad, right? So I'll just share my screen. किसी को कोई भी doubt होता है तो feel free to raise your hand. I will keep on pausing the PPT in middle, and that will help you, you know, if you have any questions, you can ask them. Is my screen visible? Great. Uh, so technically we're talking about Norcet in Germany in this session, but पहले हम Norcet के बारे में बात करते हैं specifically कि Norcet होता क्या है. So it's an exam conducted for entry into AIMS, specifically meant for nurses and other government institutions, right? It is considered to be one of the most toughest exams in India, right? So इसके लिए you might be aware that there are various coachings which keep on happening. या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो, राइट? Every each and every coaching also has its own set of expenses which every nurse bears. Coming to the 2025 numbers, कि कितने लोगों ने नॉर्सेट दिया? So 88,902 applicants were there, out of which approximately 82,000 nurses appeared for only vacancies which were 3,700. So every one applicant के साथ 22 other competing nurses थी. So hence the reason why it is considered to be one of the most toughest examinations. इसके numbers के around idea था किसी को? Anybody knew कि इतने applicants थे? किसी ने दिया था last year Norcet का exam? Any one of you? Apart from Abhishek, I think Abhishek mentioned. No? ठीक है. So इससे Norcet 25 के नंबर्स हैं ये. इससे पहले, उससे पिछले साल में कितने लोगों ने दिया था? So 68,000 people gave उससे पिछले साल में. So technically 15,000 ज्यादा लोगों ने Norcet examination दिया है. So the competition is not only declining but it is increasing year by year. So it is getting more and more difficult for nurses to clear Norcet. Eligibility क्या होती है? Like for anybody who is a BSc post basic nursing जिन्होंने कर रखी हो वो दे सकता है Norcet. GNM with 2 year of experience they can also give. They have to have a mandatory registration. Nursing Council का age limit is up to 30 years and they have to be a citizen of India. Primarily, before I come to the next slide, so any specifically reason कि लोग क्यों देना चाहेंगे, कि why would people want to enter into AIMS? क्या reason हो सकता है? कुछ idea दो. क्यों एक गवर्नमेंट नौकरी चाहिए किसी को? क्या हेल्प करता है? We'll make it much more interactive अगर possible. If anybody has a comment to make, you can make. But specifically what I feel is एक stable India गवर्नमेंट जॉब सब कुछ है सब लोगों के लिए. So that is right. But क्यों है that? It provides you a stable job, right? चलिए, अच्छी सैलरी मिल सकती है, ये एक और रीजन है. करियर प्रोग्रेशन अच्छा हो सकता है, रिस्पेक्ट मिल सकती है, एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी. So no, you disagree with the point? You have a different chill point of view on this? We'll be happy to hear. Yeah, I mean, like, you can enjoy, you can get respect, but not lifetime of enjoyment. Salary, expected salary for starting salaries is
65 to 80,000 in hand salary which you get after Norcet. 8th कमीशन के बाद थोड़ी बढ़ सकती है आपकी सैलरी, बट इन हैंड सैलरीज आपकी अराउंड इतनी रेंज पे रहती है. बट एट द सेम टाइम रियलिटी क्या है, पीपल हु आर वर्किंग इन एम्स, कितना वर्कलोड रहता है फॉर एवरीबडी. लाइक यू माइट नो पीपल हु आर वर्किंग इन एम्स, यू माइट नो पीपल हु आर वर्किंग पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल. सो द अमाउंट ऑफ पेशेंट्स जो आते हैं डे इन एंड डे आउट, आई थिंक nobody else, I think, hats off to our institutions जितना ज्यादा काम वो करते हैं. बट एट द सेम टाइम इट इज द नंबर्स आर वे टू मच फॉर एनीबडी टू हैंडल. बहुत ज्यादा क्राउड हैंडल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वर्किंग प्रेशर एंड एवरीथिंग. रिस्पेक्ट है बट एट व्हाट कॉस्ट. सो अगर 80,000 कैंडिडेट्स अगेन अगर compete कर रहे हैं जॉब पोजिशन के लिए, एंड अगर आप ऑलरेडी एलिजिबल है फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, सो व्हाई नॉट कंसिडर अनदर ऑप्शन, right? Which brings us to an opportunity which is there for people in Germany, right? I mean, Tanvi, you're probably right. I think, even in private hospitals, the working hours are equivalent or much better. But I think I would want to highlight कि regardless of the fact that there is an opportunity available for nurses, all nurses rather in India who are either GNM, BSc in Germany, simply because they have aging population. उनके पास population ही नहीं है to cater to their people. They have a severe nursing shortage. I think we've highlighted it multiple times previously. 3 lakh nurses की requirement है, and that is expected to grow only in the coming years. 2030 तक 3 lakh है. I think उसके beyond it will keep on growing. And there's a clear pathway which is possible for anybody from India to move to Germany. इसके लिए क्या चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? जैसे हमने नॉर्सेट की मैंने बात करी, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, GNM विद 2 year एक्सपीरियंस. बट यहाँ पे क्या है कि GNM BSc विद नो एक्सपीरियंस आल्सो विद फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई, कैन आल्सो गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी. द ओनली थिंग व्हिच यू नीड इज अ विलिंगनेस टू लर्न जर्मन लैंग्वेज. तो अगर आप नॉर्सेट की तैयारी कर सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली जर्मन लैंग्वेज का ही एक हर्डल है व्हिच यू हैव टू क्लियर इट. एंड दैट entirely depends on you, how much time you are giving, how much time you are able to devote. That is the only gap between you and a job available in Germany, right? तो अगर मैं सैलरी का कंपैरिजन करूं, लाइक अगेन आई मेंशन कि 65 से 80,000 के बीच में इन हैंड सैलरी है. सो जर्मनी में सिमिलरली लाइक 2 to 2.5 लाख के बीच में आपकी इन हैंड सैलरी होती है इन जर्मनी. एंड इंक्रीमेंट्स ओवर टाइम पे आर पॉसिबल इन जर्मनी. हाउएवर इन इंडिया ओवर टाइम के लिए आई डोंट थिंक दैट एनीबॉडी गेट्स पेड इन इंडिया. जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर ऑब्वियसली इंडिया में गवर्नमेंट नौकरी है, सब कुछ स्टेबल है, यू आर लेस लाइकली टू गेट फायर्ड इफ यू आर इन अ गवर्नमेंट जॉब. जर्मनी में क्या है कि सिंस वहाँ पे शॉर्टेज ही इतनी है नर्सेस की, तो वो निकाल के भी किसको लाएंगे. एंड फॉर देम टू रिमूव यू, स्पेशली आफ्टर यू कंप्लीटेड योर जर्नी फॉर अबाउट अ ईयर टू मेक इट टू द हॉस्पिटल, सो दे वोंट रिमूव यू. देयर आर हाई चांसेस दैट योर जॉब इज मच मोर स्टेबल इन जर्मनी दैन देयर इट इज इन इंडिया. इंडिया में स्पेसिफिकली आई थिंक किसी ने बोला था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उतने वर्किंग आवर्स लॉन्ग होते हैं, विच इज एब्सोल्युटली राइट. प्राइवेट हॉस्पिटल में रादर आपकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, आपको कोई भी देयर इज हाई एट्रिशन रेट आल्सो व्हिच इज देयर. सो टेक्निकली वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज देयर आर लिमिटेड number of hours जो Germany में to complete, only 40 working hours in a week. And if in case you work more than that, then you get paid overtime benefits which are 1.5 times of the salary. And if you're working on Sundays, then typically you're getting tax free salary also. अभी तक, if I'm moving fast, so any doubt as of now, अभी तक any query, any doubt, anything which you want to ask? As I mentioned, I think in India typically respect for nursing, specifically अगर Norcet की ना भी बात करें, तो overall as a profession, as a career, आपने अपने colleagues से, whoever is a fresher, you might know people who have done nursing, who are into this profession. कितनी respect होती है इंडिया में? Anybody can state in the comment, zero. But at the same time, Germany में क्या है कि you're almost at equivalent to a doctor, because your opinion vis-a-vis a doctor's opinion is considered to be as equal while treating a patient. It is not just social कि आपको socially किसी को respect करना है. It is systemic. Germany में it is mandatory for everybody to respect nurses, and hence the reason why आपका social stature में जो आप belong करते हो, that increases heavily. So that is another reason why I feel that majority of the people who are even with us in our program, they want to move to Germany for this aspect कि आपको respect ज़्यादा मिलती है. Generational wealth का comparison करें तो of course यहाँ पे salaries आपको मिलेंगी, better मिलेंगी, but कब तक better मिलेंगी, right? But अगर आप ऐसे nation में जा रहे हैं जहाँ पे आप at least bare minimum you can save about 70 to 80,000 rupees a month, or rather 1 lakh rupees a month, तो आप सोचो कि over the years how much you're able to save and create generational wealth. That money
money you can utilize to send home. That money you can either keep in your savings account and withdraw your pensions also. And at the same time, you're earning in euros. So आपको पता ही है कि rupee versus euro, how much decline has been there. And over the years, coming years, we're not seeing it to improve drastically. So generational wealth create करने के chances increase multifold in this aspect. जहाँ पे आपकी education free है, healthcare free है, you get social security benefits also, you get nursing care benefits also while you're there. So everything is taken care of. Not only that, I think आपके if you have kids while you're in Germany, so आपको उनके allowance भी मिलता है every month, 250 euros का per child until the time they reach the age of 18. So then these are multiple benefits which you can get. अब finally आते हैं कि like cost comparison. So I mean as I mentioned, लोग self study भी करते हैं नॉर्सेट के लिए, उसके लिए बुक्स खरीदते होंगे, 5,000 रुपए की बुक्स आती होंगी. ऑनलाइन कोचिंग करते हुए there are different courses available, 10,000 से 30,000 रुपए तक के ऑप्शन है. ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो अपना फुल टाइम आप डिवोट कर रहे हो कोचिंग में, तो आपके खाने पीने के एक्सपेंसेस, रहने के एक्सपेंसेस भी होते हैं. दैट टर्न्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लाख. अगर इतना ही करना है, एंड दैट टू फॉर अ सीट रेशो जहाँ पे एक सीट के लिए लाइक देयर आर 22 पीपल हु आर competing for the same seat, and जहाँ पे there is an alternative available, जहाँ पे we only provide this option जहाँ पे you have to make an investment of 75,000 rupees that is refundable entirely. We refund the money back once a nurse reaches Germany. So there is a clear option in front of you. Rather जो भी मैंने आज स्लाइड पे बोला, इस पीपीटी पे बोला, आई थिंक आई विल मेक अ समरी स्लाइड, बट इससे पहले आई वुड जस्ट वांट टू कम बैक एंड सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आल्सो. अभी तक आई थिंक फॉर द वेबिनार आई हैव अ समरी slide in front of me. Before presenting that, any question, any query which anybody wants to ask. Agar if somebody is feeling shy to ask a question, you can message in the chat box. सारे सबको समझ में आ गया कि why Norcet, why Germany? Any no questions about Germany? No questions about कि क्यों करना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट है? सर आई हैव वन क्वेश्चन. Yes. सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आपने स्लाइड में दिखाया कि नॉर्थ साइड हमें क्यों करना चाहिए और जर्मनी में हमें क्यों आना चाहिए. आपने ये भी बताया कि फैमिली के लिए सही रहेगा. करेक्ट. तो सर मुझे ये जानना है कि जैसे अगर हमने वहाँ पे जर्मनी में चले गए तो उसके बाद फैमिली मतलब कब तक जा सकती है या कितना टाइम लगेगा, या साल भर तक, साल भर हम चले गए वहाँ पे काम कर लिया, फिर उसके बाद क्या फैमिली के लिए भी अकोमोडेशन वगैरह हॉस्पिटल वाले देंगे? सो इसमें क्या रहता है ना कि वहाँ पे जब आप जाते हो जर्मनी में, यू बिकम अ नर्सिंग असिस्टेंट इनिशियली. यू हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन कॉल्ड कैंटनस प्रोसम. उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो इन जर्मनी. सो वंस यू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स, तो जस्ट टिपिकली आप मान लेते हैं कि आप 27 जनवरी में पहुंचे हैं जर्मनी में कृतिका, ठीक है. सो जनवरी 27 से लेकर आपको जनवरी 28 तक टाइम लगेगा टू गेट बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन जर्मनी. सो वंस यू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स, उसके दो फायदे हैं. वन इज कि दैट देयर इज अ क्लियर जंप इन द सैलरी व्हिच यू विल गेट. इनिशियल सैलरी जो 3 लाख रुपए होती है पर मंथ इन जर्मनी, दैट बिकम्स 4 लाख. That is one. Secondly, why that is important also is कि आपका accommodation जो आप जिसमें आप रह रहे होते हो, आप single accommodation या sharing accommodation में होते हो initially, which is subsidized by the hospital. But then of course, once you want your family to come, then you would want to shift to a bigger place. So bigger place मतलब bigger rents also. So once you have a increment in your salary, then you can afford a bigger place also. तो उसके बाद आप अपना process शुरू कर सकते हो. So typically 1 to 2 years more. So अगर आप 27 में जा रहे हो तो 28 तक आपका registration पूरा होगा. And then again you can consider 1 to 2 years depending on कौन से district में हुआ and कौन से, because every government, every district in Germany has a different rules and regulations about family reunification. But typically 1 to 2 years का time period you can consider for the family process to start. सर आपके कहने का मतलब है कि एक से मतलब 1 to 2 years हमें लगेंगे वहाँ पे सेटल होने में. अगर इससे ज्यादा टाइम लगेगा तो क्या करना हो सर? नहीं, so typically देखो एक साल में आपको KP एग्जाम लेना होता है in order to become a registered nurse, and for that also your hospital provides you training, provides you all the support required, and within 1 year you can clear that exam. And once you do that, उसके बाद 1 से 2 साल आप मान के चलो, तो 2 to 3 years you can consider easily. Okay sir. Tanvi, I think I have asked the fair question that what about the nurse-patient ratio in Germany, right? So see, majority of the support which is required, since I mentioned कि Germany में aging population है वहाँ पे, so there are job opportunities available in the caregiving role also. So when you become a caregiver, typically you're given 5 patients to handle in a day. While in a hospital setup, it is more or less similar to what you're doing here in India. However, at the same time, it's not like you're giving all the patients. जैसे कई hospitals में होता है, कई private hospitals में एक ही nurse है, short staffed है, तो एक ही nurse सब कुछ संभाल रही है ना one particular department. That does not happen because they would want ideally everybody to be there and shifts are managed properly. उससे ऊपर, even if the work is hectic, then you have your limitations in terms of hours. For example, if your work is becoming really hectic and if the head nurse sees that you are tiring out, then you're not given overtime at all. So 40 hours आपका limited
dietitian class. So either way, your work-life balance is given much more priority, regardless. Even if your work is getting hectic, then आपको extra hours नहीं मिलेंगे. I hope that answers the question. Then any other question, guys? नहीं, so I'll come back to the same slide now. I have a summary slide which I want to showcase. Right, so this slide clearly showcases one you have also I forgot to mention, I think Norcet के लिए लोग जैसे IAS की तैयारी करते हैं, I think many of the nurses gives Norcet also multiple times. So despite multiple attempts, not everybody is able to clear. However, in Germany I think there's a clear structured pathway जहाँ पे आपको सिर्फ B2 level तक पढ़ना है, and that can get you a job opportunity easily if you're able to speak German properly. Salary ranges I mentioned are clearly 65 to 80,000 in India, starting salaries in hand, whilst it had salaries are about 2 to 2.5 in Germany. There's a limited potential when it comes to salary growth in India, while in Germany, since you're starting only at the bottom level of the nursing pyramid, तो आपके पास growth potential बहुत होता है. Settlement Norcet में obviously India में कर सकते हो, but अगर आप Germany में nurse बनते हो तो then you can move all over the Europe as well if you become a registered nurse in Germany. Cost, as I mentioned, initially 5,000 से 10,000 तक self study में लगते हैं, up goes up to 1.2 if you're doing it offline. But Germany में there's no cost, but rather an investment from your side, which is a 75k refundable deposit, which we charge, right? I'll just give you a thought to, kind of, which will stay with you. Language probably थोड़ी hard लग सकती है, learning a language, but Norcet is definitely harder is what we have seen. So give yourself a chance to, move to a global destination which actually respects you. So I'll just leave you with this thought. Meanwhile, if anybody has any questions, I'll be happy to answer them. And for whoever has attended this session, we'll be sharing this PPT deck across ताकि अगर कोई भी query हो तो you can kind of see this and get back to us whenever required. I'll be here on this call for another 5-10 minutes if anybody has any question. So that depends, I think, apply करने के कितने टाइम बाद आप eligible है. So Shelly, if you can elaborate on the question once. मतलब overall कितना time लगता है is what you're asking, कितना time period लगता है to go to Germany? Is that the question? Okay. So overall time you can consider about you require about 10 months to learn German up to B2 level. Post that you have about 2 to 3 months of processing time period. So you can consider 12 to 13 to 14 months of timeline which is required to move to Germany, because आपकी documentation, visa processing, flight tickets and everything will take some time after you learn the German language. So 12 to 14 months, I would say. Any other question next? I think initially Sonu was quite chatty. Sonu, आपके पास कोई question है तो you can ask me. Anybody else just feel free to ask any question. I hope everybody had some key takeaways from the session. I hope it was useful in some way or the other. Yes, so we do provide language training classes. So we provide as per your flexibility. We do have batches which are there, which are not more than 10 to 15 students in a particular batch, so that you get some attention as well. And we monitor every student on a week-to-week basis also. So these are not single classes, but these are group classes. But in a group, there won't be more than 15 odd students, which you can do. We provide both offline and online classes, and we prefer students who can come offline. However, you can do online for A1, A2, which are initial levels. But हम prefer करते हैं लोग अगर B1, B2 के लिए offline, because B1, B2 में थोड़ा it gets a bit more serious when it comes to learning the language, because अब sentences form करना शुरू हो जाते हैं German में. Yeah, so I mean, fees which we are charging is refundable, entirely refundable. We take in 3 installments of 5,000, 35,000 and 35,000. Those are also structured in a way that you don't feel the burden. And for that, Shelly, I would really recommend that you reach out to the SPOC जो आपको allot हुआ होगा हमारी team से. You reach out to them. They will be able to explain about the fee structure much better and give you whatever guidance. See, BSc nursing first year वाले apply कर सकते हैं. Yes, definitely कर सकते हैं. Of course, BSc आपको nursing complete करनी होगी in order to move to Germany. But the important thing is that you would have learned the language before passing out, and once you have the BSc nursing qualification, तो आप बाहर निकलते ही, in fact, nurse बनते ही, you can actually just give an interview and move to Germany. So you'll hardly take about 4 to 5 months. So typically लोगों को German सीखने में 10 महीने लग जाते हैं, plus again 2 to 3 months of processing time. So वो benefit मिल जाएगा आपको. So technically your first placement will also be in Germany. So I would suggest that you start learning the language from the get-go. इम्तियाज, आपको कोई question पूछना है? Because I think I answered your question. Age limit. Age limit रहता है. Age limit is about 43 to 44 years. Typically, nurses who are above and beyond that age, we do have nurses who are studying, but we
don't recommend them, but until unless they are very much willing to go, तब वो जा सकते हैं। आपकी क्या एज है इम्तियाज, if you don't mind asking me? 32। 32 is a decent enough age। आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा आपके पास तो। यस सर, 6-7 ईयर्स एक्सपीरियंस। 6-7 ईयर्स। इसमें कोई गैप है आपके एक्सपीरियंस में? कोई गैप है एक्सपीरियंस में, मतलब कभी आपने गैप ईयर लिया है बीच में, या फिर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं 6-7 साल से? भाई जॉब कर रहा हूँ मैं इस वक्त भी, अपना क्लिनिक भी चला रहा हूँ। ओके ओके, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग एन एंट्री। रादर आपके पास 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी भी है टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन जर्मनी विदाउट इवन क्लियरिंग दैट एंट्रेंस फॉर्म, जो मैंने बताया था वेबिनार में। एग्जाम देना होता है नर्सेस को, जो नर्सिंग असिस्टेंट बनते हैं पहले, देन केपी एग्जाम देके रजिस्टर्ड नर्स बनते हैं। बट आपके पास एक अच्छा मौका है, सिंस आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल से ऊपर का, कि आप रजिस्टर्ड नर्स बन के जा सकते हैं डायरेक्टली इंडिया से। तो आप बिल्कुल टीम से कनेक्ट करिए एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। आई एम आल्सो हियर ए रजिस्टर्ड नर्स। Okay, perfect. Any other question, Imtiaz? Will be happy to help. Sir, I have one question. Yes. सर मैं ऑलमोस्ट मैं जर्मनी में मैं वर्क कर रहा हूँ, मतलब मेरे को 5 ईयर हो गया है। Okay. एनी रीजन, किसी भी रीजन से मैं छोड़ देता हूँ या फिर लीव करके आ सकता हूँ, तो रीज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है? Okay, so आपने बताया कि आप जर्मनी में है, या फिर आप क्या जर्मनी में आपने हाइपोथेटिकली पूछ रहे हैं कि जर्मनी में आप काम कर रहे सर हैं मैं 5 साल से? मतलब फॉर एग्जाम्पल ओके ओके ओके, अगर आप 5 साल से काम करें जर्मनी में और आपको छोड़ देते हैं, जी, तो आप जी। वापस रिज्वाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं आप? जी। ओके, सो जी, जी। आई मीन सिंस आई मेंशन्ड यू कैन सी कि देयर इज अ क्लियर शॉर्टफॉल ऑफ नर्सेस, राइट? सो अगर कोई नर्स जर्मनी छोड़ के जाता है 5 साल काम करके, तो आपके जी। पास सीवी में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा कि हाँ, जर्मन हॉस्पिटल में आपने काम करा या फिर जर्मन फैसिलिटी में काम करा, तो दे विल बी हैप्पी टू गेट यू बैक, बिकॉज एक तो आपने ऑलरेडी सिस्टम्स के बारे में पता है, एंड सिंस शॉर्टफॉल तो रहनी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो दे विल बी हैप्पी टू गेट यू बैक। तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिंस 5 साल तक आप कर चुके होंगे वहाँ पे काम, तो आपको होपफुली तब तक पीआर की भी एलिजिबिलिटी आप मीट कर चुके होंगे। दैट आल्सो गिव्स यू अ बेनिफिट कि आप कभी भी इन एंड आउट जा सकते हैं। इजिली जा सकते हैं सर। हाँ जी। होप सर। सर ऑफलाइन कोचिंग हो सकती है? सॉरी इम्तियाज जी, आई थिंक योगेंद्र जी के क्वेश्चन के बाद आपके क्वेश्चन पे हम, इफ यू डोंट माइंड। हाँ जी इम्तियाज जी, आई थिंक आप पूछ सकते हैं, उनका क्वेश्चन होंगे था। ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो आप? ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं हम, ऑनलाइन भी करते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर, जो आपका इंस्टीट्यूट है उसमें 100% श्योरिटी है ना कि आप जर्मनी मूव कराते ही हो बच्चों को? अगर आप कृतिका, जैसे हमें लास्ट टाइम पूछा था क्वेश्चन, इट ऑल डिपेंड्स कि आप जर्मन लैंग्वेज कितना अच्छे से सीख पाते हो। B2 लेवल तक आपको सीखना है पूरा का पूरा, एंड सर्टिफिकेट लाना है B2 लेवल का। एंड वंस यू डू दैट, वंस यू आर एबल टू स्पीक इन जर्मन प्रॉपर्ली, देन यस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। बट कंडीशन कि आपको जर्मन आनी चाहिए अच्छे से, आपको B2 सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। Yes. ओके सर। लेकिन ज्यादातर बोलते हैं कि B1 ही खाली नर्स को चाहिए। कुछ कुछ जगहों पे B1 पे सी अपॉर्चुनिटी है, बट B1 पे क्या है कि देयर इज अ ड्रॉबैक आल्सो इन सेम टाइम, क्योंकि वहां पे टिपिकली लाइफ ऑन अ रेगुलर बेसिस लिव करने के लिए यू रिक्वायर सर्टेन लेवल ऑफ जर्मन स्किल्स, जो B1 लेवल पे अवेलेबल नहीं होती है। एंड इवन इफ यू गो B1 पे, तो आपको B2 करनी पड़ती है, दैट इज अ कंडीशन, वरना आपको रजिस्टर्ड नर्स बनने का मौका नहीं मिलता। सो यू आर स्टक एनीवे, आपको वहां पे जाके B2 करो, यहाँ पे करो। पॉइंट इज कि यहाँ पे B2 करके आप वहां पे रजिस्टर्ड नर्स बन जाओ, एंड यू कैन फोकस ऑन योर करियर देयर। बिकॉज अगर आप नई कंट्री में जा रहे हो, तो एक तो कंट्री शिफ्ट करने का एडजस्टमेंट, प्लस वहाँ पे नए एनवायरमेंट में रहने का एडजस्टमेंट, प्लस नए लोगों से मिलने का एडजस्टमेंट, प्लस नई लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। सो देयर आर लॉट ऑफ न्यू शिफ्ट्स व्हिच आर हैपनिंग, सो हेंस B2 इज अ मस्ट। एंड मोर ओवर, इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री जहाँ से नर्सेज जर्मनी जा रही है। सो देयर आर अदर नेशंस लाइक इंडोनेशिया, वियतनाम, वहाँ से ऑलरेडी नर्सेज B2 करके जा रही है। सो हॉस्पिटल ऑल्सो हैव ऑप्शंस की इफ दे हैव समबडी जिन्होंने B2 कर रखा है, तो व्हाई विल दे हायर समबडी जिन्होंने B1 कर। सो इट गेट्स टफर टू फाइंड अ जॉब इन B1, बट B2 में यस, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। सर वन क्वेश्चन अगेन। हाँ जी, यू कैन सी, आई थिंक एक तन्वी का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, उसके बाद आता हूँ। तन्वी इज आस्किंग 21 की एज Sure, में sure. स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। सो 21 इज द राइट एज। अगर आपने अभी, आई थिंक आप फ्रेशर हैं, आप कर चुके हैं, सो इट इज द राइट अबाउट एज टू स्टार्ट लर्निंग, एंड यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। हाँ जी, यू कैन सी, आई थिंक यू कैन आस्क क्वेश्चन। पर मेरा क्वेश्चन था कि ये सर जर्मन गवर्नमेंट से ही होता है ना, उधर जाके प्राइवेट तो कुछ नहीं होता है ना सर? There are ट्रेनिंग both, जो होता I है mean, हमारा जो नर्सिस का, तो देयर आर बोथ इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल, देयर आर जर्मन प्राइवेट गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशंस। जी, ओके ओके, प्राइवेट देन गवर्नमेंट सब कुछ। So there are 3 tiers of hospitals कॉन्टेक्ट भी typically. सर सम कॉन्टेक्ट भी होता है क्या? जैसे लाइक सम So it is कॉन्टेक्ट like a होता है 2 permanent ईयर offer. 3 ईयर ऐसा भी होता है? नहीं, सो इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल। जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में टिपिकली आपको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क अलाउड होता है, यहाँ पे इट्स लाइक अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफर ओनली। 6 महीने का प्रोबेशन, एंड देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे। सो जैसे यहाँ पे भी हर जगह पे, जैसे किसी भी कॉर्पोरेशन में जाओगे तो प्रोबेशन पीरियड रहता है ना, आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है इनिशियली, देन उसके बाद आपको कंफर्म कर लेते हैं। दैट इज
is how it is. Moreover, वहाँ पे आपने जैसे बोला कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, तो यहाँ पे 3 tier of institutions रहते हैं in Germany in the healthcare space. There are university hospitals, there are hospitals, and then there are care homes. Okay, sir. So university hospitals are the ones which are like typically यहाँ का aims will be university hospital there, which get all the government grants, which get all the top facilities. So वहाँ पे growth करने के chances ज़्यादा हैं. So you're given 3 tier of options. One is university clinics or hospitals. Second is hospitals, and then third are care homes. So that is how it is divided. And वहाँ पे if you would see that every facility rather is as per our standard. यहाँ पे जो आपके private hospitals होते हैं उनके standard से equivalent ही होते हैं या फिर better. Sure, sir. सर ये टेलिक रहेगा बेहतर या गए थे एग्जाम? आपने जैसे आपने कर लिया जो मैंने आपने ऑलरेडी। नहीं, मैं कोचिंग कर रहा हूँ इस वक्त B2 की। अच्छा A2 की कोचिंग कर रहे हैं ऑलरेडी आप। So I would say that ये क्वेश्चन तो B1 के बाद आप पूछते तो बेटर रहता है, बट लेकिन यूजुअली सी देयर आर टू वेज टू लुक एट इट. टेल्क इज मच बेटर फॉर पीपल हु आर मूविंग टू जर्मनी फॉर वर्क पर्पसेस. गोइथे इज मच बेटर फॉर पीपल जो एकेडमिक पर्पस के लिए करते हैं लैंग्वेज को एकेडमिक के लिए. सो आई वुड से टेल्क इज बेटर दैट इफ यू अपीयर फॉर टेल, बिकॉज आजकल इंडिया जी आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं, कौन सी सिटी में? कश्मीर में। कश्मीर में. अच्छा, तो आई मीन टिपिकली टेल्क सेंटर्स आर देयर इन चंडीगढ़ आल्सो व्हिच इज नियर बाय. वहाँ पे भी जा सकते हैं, दे सकते हैं पेपर. और दिल्ली भी आ सकते हैं. दिल्ली में भी देयर आर 2 सेंटर्स व्हिच ऑफर दिस फैसिलिटी एंड डेट भी इजीली मिल जाती हैं आजकल. सो यू वोंट फाइंड डिफिकल्ट, बट गोइथे में इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड डेट्स आल्सो. लाइक गाइस, एनीवन who wants to ask any question? ठीक guys, I think summarized it all along. Rather, I would just say that if you have any questions, queries, feel free to reach out to your team. They will be happy to assist you with any query or any doubt. And whatever we shared today, we will share it as a PDF to everyone who attended. And thank you so much for taking the time out, and wishing you all the very best in your career. Hoping to see you in our program.